स्टार्ट करवा। हाँ कृष्णा तुमर वॉइस म्यूट करो। कृष्णा राउत हेलो। हाँ वॉइस म्यूट करो तुमरा। रुद्र कौन खबर रे साहू? आज्ञा सर। कौन ठीक ठाक होची? आज्ञा सर। किसी असुविधा ना सर। अच्छा ठीक है। ब्रजेश्वर Yes sir. हाउ इज द जोश? पूरा फुल फुल हाय सर कहबो ना तुम देखि ना होते सर्जिकल स्ट्राइक मूवीटा? नहीं सर। है नहीं सर। काम नुह तुम सब दुखी आत्मा भलिया रोच सब। ओके सो आई शुड स्टार्ट द क्लास नाउ। अच्छा एटा मु काली पठेइतिली समस्त देखिथिबो? Yes, sir. ओके okay, so this is the projectile motion I was talking in the previous class, okay, about projectile motion. So hello all of you, please mute your voice kindly. Pranayani Raut eman सब mute करो। नॉइज आछी म्यूट करो। अरे ये कृष्णा जानी पाउनी। Okay, so I was talking about projectile motion and एटा होची तमरा जो इनिशियल वेलोसिटी जो वेलोसिटी रे। अरे कृष्णा तुम्हें म्यूट करो, तुम बारंबार कहूची वॉइस टा म्यूट करो कहले तुम ऑन कर दो जो वॉइस टा जानी पाउनी बोते से पिलाटा। So mute है। अरे म्यूट करो रे कौन तुम कहई। गोटे म्यूट ऑप्शन थिबो देखो, गोटे चिन्ह थिबो, गोटे माइक्रोफोन चिन्ह थिबो, ता पर क्लिक करले म्यूट हे जो। हेलो हां को कोन होला? हेलो हां कह। से म्यूट करी छी म्यूट करिचु होउनी कांगी? Okay, so it is the projectile. I was talking about projectile motion yesterday. So this is the initial launch velocity. Launch velocity. Launch velocity. Launch velocity. ताको तमे u नियो किंबा v0 नियो, but this is my sign conventions as I was talking yesterday. So this x0 किंबा v0, these are all initial, or you can write v initial. Okay. So these are the sign conventions which I am going to use. So I am going to use O subscript O. Hala subscript O माने initial velocity किंबा initial position you can say. So हमें जो देखिबा so what is the maximum height up to which this projectile can move? काली जो कहउतली. Okay, so एटा कोन हबो? What is the maximum height? What is the formula for the maximum height? वो h is equal to v0 square. Okay, v0 square sin square theta by 2g. This is the maximum height up to which this projectile can reach. Okay, so v0 square is the initial velocity, sin square theta by 2g. Similarly,
what will be the range, maximum range माने horizontal range. The body is actually what? Body is moving horizontally from this position to this position through a vertical motion. Okay, तो ये जो काली जो कहूतली तो ये जगह रे ये जो माने maximum height में क्या हो जाएगा vy माने y component of the velocity can say. Okay, similarly तापरे आसीबो पुनी velocity increase हेई कि आस्ते आस्ते आसी कि एठी ग्राउंड रे पहुंचीबो, that is called जे पुनी एठी कोन होई जिवो गोटे तो एई जो जति की डिस्टेंस कवर कला from this initial position to final position, so this is the what range of the projectile. So range of the projectile, this line is called as the range of the projectile. So what is the formula for range of the projectile? हला एटा मु 10th क्लास पाठटा एटा पढौची तापर प्लस 2 बुझिबी हला. So range of the projectile हमें calculate करे थिले. So we used to put the formula v0 square sin 2 theta by okay z. So at what angle the range will be maximum? v0 square sin 2 theta by g. At what angle the range will be maximum? माने x axis रू केते angle रे projectile टा launch हेले maximum range हबो 2 theta माने 2 into 45 degree अगर हम लोग करेंगे, so it will give you sin 90 degree. So sin 90 degree is 1, so you can get the maximum range of the projectile. Okay, so it has range of the projectile. And what is the time period? Time period by which this body माने ए position रो ए position जीवा पई केते time लागिला जदि हमें we need to calculate. So that is the formula is 2v0 sin theta by g. Okay, that means 2 into initial velocity sin theta divided by g you can write. So similarly ए जो तीनटा equations रहिला, these three equations, now we are considering x and y axis. I mean plus 2 को पढिले माने आमे तकर तार x component y component ए सब को स्टडी मध्य करियो पडियो हला. आमे छोटो क्लास रे पढु तो सेति पई आमे जदी ए this whole range of formulas, these three formulas if we calculate in terms of x component and y component or x axis and y axis, so what we can find? So display आमे कोन जानचे तीनटा equations हम कल कहथिली kinematics equation. What are the kinematics equations? V equal to u plus at, or you can say v final or v minus v0. Okay, v is equal, sorry, so v is equal to v0 plus at said yesterday. Okay, similarly what s is equal to v0 t plus half at square and similarly out kon thila v square minus v0 square is equal to 2as. ये तीनोटी काइनेमेटिक्स इक्वेशन थिला. तो सिमिलरली हमें x अच्छा ये जो वेलोसिटी टा जो तार जो माने वेलोसिटी रो वेक्टर रो गोटे कंपोनेंट बाहरिबो x एक्सिस रे and one component is in y axis. Okay, so what will be the x axis according to vector notation? एटा कोन हे जिवो v0 x माने इनिशियल वेलोसिटी के जो x component है that will be equal to v0 cos theta. x component will be equal to v0. आमे जदि इठी गोटे 90 डिग्री एमती ड्रा करिवा, sorry, so this let it be the 90 degree. So this is v0, this is v0 x and this is theta. इठी गोटे 90 डिग्री पाइथागोरस थ्योरम अनुसार आमे कोन पाइबा v0 x is equal to v0 cos theta. cos theta टा को पकाओ बेस बाय हाइट हला. एटा सब बेले मन रखियो, एटा जमा भूल भाल करिवनी. So v0 x is equal to v0 cos theta. Similarly, v0 y will be equal to what? v0 sin theta. We know it. So similarly, आमे जदि ए दुईटी इक्वेशंस जदि एठी पकेबा x पई हला. So what माने आमे ए इक्वेशन टा पकेबा. Let us consider this equation, this equation to this x axis. Okay, so एटा कोन हे जिवो x sorry, so let us consider this equation s equal to ut plus half at square जोटा सेटा जदि हमें x component हमें खाली x axis को जदि हमें देखिबा, so what will be the s displacement टा केते x minus x0 माने एटा होची x is equal to x let it
एटा होची x is equal to 0 पोजीशन रे थिला सो x minus x0 is the displacement is equal to v0 t माने v0 t okay plus half at square but what is the acceleration in the x axis acceleration in the x axis ता कोन हे जिवो 0 हो जिवो because since the horizontal component of the projectile velocity does not change the horizontal component of the projectile velocity काली बारंबार कहछि एटा important point एटा मन रखो so horizontal component of the velocity does not change what is changing the vertical component of the velocity is changing okay तो horizontal component जदि change हबनी ता माने acceleration in the horizontal axis हमें कहि परिबा कोन zero acceleration so it is half at square का 0 हो गला so you will get finally this equation and ये जो v0x के जगह अगर हम लोग v0 cos थीटा भी डाल सकते हैं हां v0 cos थीटा यू अरे 0 इसको कंसीडर नहीं भी कर सकते हो अगर कंफ्यूजन तुमको लग रहा है कि जो थीटा 0 जो है थीटा 0 को तुम लोग कैंसिल कर सकते हो ठीक है so x minus x0 is equal to v0 cos theta t so that is equation 1 हैला why I am writing, why I am actually using this kind of equations, why I am using x component and y component, I will prove it while solving problems. Problem क्या दिया है और हम लोगों को क्या फाइंड आउट करने के लिए दिया है उस केस में हम लोगों को कंपोनेंट ये सब वेक्टर नोटेशन ये सब यूज करना है वो जो ट्रेडिशनल ये जो तीन इक्वेशन हम लोग डाल के सॉल्व नहीं कर सकते we have to consider the vector angle okay so similarly हमें यदि सही जो फार्मूला सिमिलरली सेम s इक्वल टू v0 t प्लस हाफ at स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y कंपोनेंट अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे सो व्हाट विल बी द इक्वेशन y माइनस y0 सपोज ये बॉडी यहाँ पे है सो y0 उसका y कंपोनेंट क्या है यहाँ पे x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 है सपोज ये बॉडी यहाँ तक पहुंचा है लेट अस कंसीडर यहाँ तक पहुंचा है यहाँ उसका y एक्सिस क्या है सो लेट अस कंसीडर दिस बी द y और यहां तक पहुंचा है सो लेट अस कंसीडर दिस बी द y कंपोनेंट हैला तो सेमती हमें देखिबा सो इसको क्या बोलेंगे y - y0 इज इक्वल टू व्हाट विल बी द y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी v0y हां v0t माइनस हाफ at स्क्वायर माइनस हाफ gt स्क्वायर हम लोग क्यों लिखे यहां पे प्लस हाफ at स्क्वायर है और यहां पे क्यों हम लोग माइनस हाफ gt स्क्वायर डाल रहे हैं बिकॉज़ व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ दिस बॉडी ये बॉडी हमेशा नीचे आने के लिए कोशिश कर रहा है सो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट दिस डाउनवर्ड माने डाउनवर्ड फॉल होबा पई सब बेले चेष्टा करिवो जेमती स्टोन इज थ्रोइंग अपवर्ड्स सो वो हमेशा नीचे आने के लिए कोशिश करता है सिमिलरली दिस बॉडी एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन the vertical component or the vertical acceleration of the projectile motion is always downwards so we have to consider minus g a is equal to minus g we have to consider okay so v0 yt minus half gt square इथे हमें पकेले हैला सेमती v what is v0 y that is called v0 it देखो v0 y sin माने v0 sin theta v0 sin theta t minus half gt square इथे हमें लिखिले similarly there is a equation what v equal to u plus at so similarly इसको यहाँ पे डालो v y is equal to v0 sin theta minus gt हम लोग y कंपोनेंट डालेंगे ठीक है vy मतलब v फाइनल y component of the velocity final is equal to y component of the velocity initial minus gt काहे a माने एटी minus g हो similarly v square ए जो v square minus v0 square is equal to 2s एटा जो इक्वेशन अछि एटा को हम एंते लिख परिबा सो v0 square इसका मतलब ये मैंने व्हाट्सएप में भेजा था अगर कोई लिखा नहीं है तो इसको लिखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है ये तीन इक्वेशन चार जो इक्वेशन हम लोग मैंने लिखा है इसको लिखो सब लोग ठीक है नहीं तो फोटो देख लेना मैं भेजा था कल व्हाट्सएप में kindly note it is a very important point सर एटा हाफ gt स्क्वायर ना खाली हाफ gt रहो कोटारे एटा gt स्क्वायर से कटि जाई हला so anyway so तापरे एटा कोन हे जो vy is equal to v0 sin theta minus dt सेटा सेमति लिखिले सेमति v square minus u square equal to 2s जो so v0 square माने v final square is equal to v0 sin theta 0 square minus 2g 2as
So 2 into minus g, acceleration is minus g. What is the displacement? Y minus y0. Hala, initial final position minus initial position. So ये तीन जो equations है, these are the important equations of projectile motion. Okay, so maximum height किस angle में होगा? 45 डिग्री में होगा. तो ये सब, और ये जो नीचे जो point लिखा है, the velocity माने कौन? Horizontal velocity never changes and the acceleration in horizontal direction is 0. Okay, तापरे so what is the equation of the projectile path? ये जो तीन equation आया हम लोगों को जो मिला, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे और y हम लोगों को निकालने के लिए अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, माने every motion, suppose a body is going in a straight line from this position to this position. Let us consider. So body is moving in straight line from this position to this position. So what is the equation of the motion? Y is equal to mx plus c. Y is equal to mx plus c. This is the equation of a straight line, right? Similarly, every motion and in nature, whatever every physical phenomena what is occurring in our nature, okay, it can be explained in terms of a mathematical equation. So similarly, a projectile motion जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक वो जो जा रहा है, so if even this projectile motion also satisfies some equation, and if we try to solve these three equations what we actually what I was showing here, so solve करने के बाद हम लोगों को ये equation मिलेगा. Please note this equation. Y is equal to tan theta x, okay, minus gx square by 2 v0 cos theta 0 whole square. Okay, this is the trajectory of the projectile path जो है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो जा रहा है, ये trajectory का equation ये है. Okay, so tan theta माइनस ये जीरो कंसीडर मत करो, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाएगा तुम लोग को. सो tan थीटा x माइनस gx स्क्वायर बाय 2 v0 माने v0 cos थीटा माने कोन x कंपोनेंट रो होल स्क्वायर. सो व्हाट इज दिस इक्वेशन? इफ आई आस्क यू व्हाट इज दिस इक्वेशन, इटा को टाइप रो इक्वेशन कोया जाय. जेमति मु कहली y इक्वल टू, जैसे मैंने बोला y इक्वल टू mx प्लस c इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. पैराबोला. अच्छा, पैराबोला रो इक्वेशन को किए कहउछे? ब्रजेश्वर को व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला? 4a equal to 4. Right, y equal to 4a. What is the equation of a parabola? I am asking. ना खाली देखि देइछु गोटे कोठी मने पडिला कहि देला पैराबोला, ठीक है. इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला इज लाइक दिस: ax plus bx square, where a and b are all constant, x is variable, so y equal to ax plus bx square. ए भलिया जदी इक्वेशन थिबो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला. सो दिस इक्वेशन इटा देखो, x टा कोन एठी tan थीटा, इटा को हम नहीं परिबा a, ओके, b टा कोन नहीं परिबा x स्क्वायर, जगह को छाड़ी की बाकी जो टर्म है उसको ले सकते हैं b. ओके, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला. सो द क्वेश्चन विल कम, प्रोजेक्टाइल मोशन कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, और द प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी इज व्हाट? पैराबोला, हाइपरबोला और स्ट्रेट लाइन और व्हाटएवर ना सर्कुलर पाथ. ओके, सो चार ऑप्शन दिया होगा. so these are the basics of projectile path. okay, so हमें एबे देखिबा. हां, गोटे प्रॉब्लम देखो एटी, ए fly ball is hit to the outfield during its flight. What happens to its horizontal and vertical component of the velocity? So एठी कहिछि कोन, कार ब्रजेश्वर काट म्यूट करो, मुझे पचारि भी से कहि. सो हां श्वेता बोलिए, ये क्या होगा? So what will be the what happens to the horizontal and vertical component of the velocity? A ball is hit to the outfield. Suppose there is a ball is hit to the outfield. So it is asking what happens to the horizontal and vertical components of the velocity. What is the direction of velocity? This horizontal velocity का क्या होगा? क्या बोला था हमने अभी तुरंत?
हां गिरिजा शंकर दिंडा को horizontal constant रहइबो हां वेरी गुड को कांस्टेंट रहइबो व्हाट हैपेंस टू द वर्टिकल वेलोसिटी जस्ट माने एटा मेमोराइज करिया पई एटा दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम हां V0 sin v0 sin theta minus क्वेश्चन पढ़े हो हाँ। सब लोग क्वेश्चन पढ़िछ ना नहीं किछि पढ़ि Vy should increase fast एटा कोन Vy टा प्रथमे इंक्रीज करिवो देन आसीबो आस्ते आस्ते डिक्रीज करी करी गोटे जागा रे आसीबो दिस हाइट में मैक्सिमम हाइट में Vy will be 0 तापरे पुनी Vy इंक्रीज करी 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 आसी ग्राउंड रे पहुंचिबो एंड देन डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली आउ एठू कोन हो जिवो नेगेटिव जदि हमको आउरी तळ को जिवा पई किछि बाट थिबो ताले एठी नेगेटिव वेलोसिटी ओके so what will be the acceleration what will be the horizontal acceleration is equal to 0 what will be the vertical acceleration during the ascent and during the descent and at the topmost flight मतलब माने ऊपर ऊपर को गला को that is called ascent नीचे जाते समय उसको बोलते हैं डिसेंट एंड मैक्सिमम हाइट में उसका एक्सेलरेशन क्या है वो पूछा है कम ऑन सो एक्सेलरेशन मैंने क्या बोला था जो y कंपोनेंट का जो एक्सेलरेशन है दैट शुड बी ऑलवेज डाउनवर्ड्स तो ऊपर को जाऊ किंबा तळ को आसो आर जो एक्सेलरेशन रो डायरेक्शन प्रोजेक्टाइल मोशन रो ऑलवेज डाउनवर्ड्स सो ay is equal to minus g at all the points ay should be माने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू minus g ओके सो दिस इज द कांसेप्ट तापरे देखिबा सर्कुलर मोशन this is again a two dimensional motion circular motion okay so let us consider this a particle is moving in a circle a particle is in uniform circular motion कैसे हम बोलेंगे कौन से पॉइंट में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला जाता है इफ इट ट्रैवल्स अराउंड ए सर्कल or a circular arc at a constant speed or constant velocity you can say at a constant uniform speed okay so if a particle is moving in a circular path at a constant uniform speed so that motion is called as circular motion okay although the speed does not vary mane velocity is constant or speed is constant so speed is not varying but what is actually varying the particle is accelerating because the velocity changes in direction अच्छा speed doesn't vary माने constant speed माने acceleration तो zero होगा करता है कि नहीं but why it is accelerating why it is moving when speed is a constant माने acceleration should be zero but why the particle is accelerating because the velocity changes its direction see ये सब प्रूव करथिले तमे प्लस 2 रे एडा सब प्रूव करथिबो बट नाउ वी आर नॉट कंसीडरिंग दिस all this proof and all part okay so just try to remember a few basic things so let us consider at this point so what is the velocity mo sabule कहिछि velocity at a certain point of a when a particle is moving in a certain path okay so velocity at this point should be always equal to the tangent to the path okay so what is the tangent to the path let the particle is moving in anti-clockwise direction so what is the tangent is linear velocity vector कौन लगे ये पढ़े राजीव दास so a is equal to so the velocity is in this direction but when the particle reaches this spot is spot रे जतले reach कला so what is the velocity रो direction ए पट को गेला so देखो velocity रो direction change होछि but the particle is moving in a constant speed अच्छा what is the direction of acceleration always in a माने circular motion the acceleration is always माने directed towards the center of the circle so that is why it is called centripetal acceleration किंबा centripetal motion you can say okay so centripetal acceleration you can say so what is the formula for the centripetal acceleration that is equal to v square by r
So this v ए v टा को कुआ जाए linear velocity कुआ जाए. So out गोटे अच्छी angular velocity omega is equal to rv, you can say. So से time में पढ़ी बागु, but for the time being हमें देखो. So this a acceleration is equal to v square by r in case of circular motion, and the acceleration is always pointed towards the center of the path. Okay. तापरे the velocity vector is कौन होला कार कोन असुविधा होछि पाल काटा तो एबे मते टिके रिपीट कर दो रिपीट टिके कर दो अच्छा मु रिपीट कर दो तमे ईयर कॉर्ड लगे कि ये करो ईयरफोन लगे कि सब बेले सुनिया पे चेष्टा करो एते जोरे इको होछि तम लैपटॉप so देखा मु माने डिसाइड करछि नाउ आई हैव टू गो माने स्पीड को स्पीड रे जिबा कुछि सुखोई हमर जो सुखोई फाइटर प्लेन अछि सुखोई ओके से सुखोई स्पीड रे हमको जीवा पड़िबो और वो सब मतलब स्लो पढ़ाई करने से कोर्स कंप्लीट नहीं होगा और फायदा कुछ नहीं. ठीक है अभी पूरा सुखोई स्पीड में जाना है वो तेजस पे जस्ट छोड़ दो ये 1000 मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर 1000 किलोमीटर पर आवर में जाना है हमको पे. so ठीक है तो रिपीट करने के लिए कोई बोला तो when a particle is moving in a circular motion the acceleration is always towards the center of the circular path, and the linear velocity v is always at the tangent to the direction is always tangent to the path. So the linear velocity changes its direction but the speed remains constant in case of uniform circular motion. Okay, so what is the formula for the acceleration? This is a is equal to v square by r, that is the centripetal acceleration. What is the time period? Suppose ये point में है, this is the original point. Let us consider this is the original point, and the particle is moving in the anti-clockwise direction, and again it comes to the same point. So what is the time span, or what is the time period, or what is the time taken by the particle to complete this one rotation? Okay, so that you can write. So t is equal to 2 pi r. That means the r is the radius of the particle, radius of the circular path. So 2 pi r divided by linear velocity v. Okay, this is the time period, or period. Simply you can say period of the circular motion. Okay, so the velocity vector is always tangent to the path, remember, and the acceleration is always pointed towards the center. So that is why it is called centripetal acceleration. Okay, centripetal force, centripetal motion. हला तो एटा सब आसीबो. So आमे जेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रे पढुतले कोन पय इलेक्ट्रॉन टा मूव करूची. Who is giving the necessary centripetal force? Electric force Coulomb. Electrostatic force by the Coulomb's force of attraction between the electron and the nucleus. Nucleus is positive charge, electron is negatively charged. So there is a force of attraction between two particles. Okay, so the electrostatic force between two charged particles actually gives the necessary centripetal force or the centripetal acceleration to move in the circular path. Okay, so observers तापर हम देखिबा observers on different frames of reference that move at constant velocity relative to each other. सही केस रे कोन होबो? So whether they will measure the same acceleration for a moving particle, or whether they will observe the different acceleration. So let us consider a frame A. एटा गोटे फ्रेम अछि हला. सपोज मु गोटे जगह रे ठिया आइछि horizontal frame रे, आ गोटे कार मो सामना रे मूव करूची फ्रेम B ताकू नबा ए फ्रेम B गोटे कार मूव करूची एट ए यूनिफॉर्म स्पीड किबा यूनिफॉर्म वेलोसिटी रे मूव करूची. लेट अस कंसीडर इन दिस horizontal direction. Okay, frame B move करूची मो रेस्पेक्ट रे मु रेस्ट रे ठिया आइछि, and frame B move करूची एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी. And let us consider there is a point P. Okay, say point P टा either move करूची ए पट डायरेक्शन रे किबा ए पट डायरेक्शन रे. Point P is also moving. Okay, but not necessarily that the point P is moving at a constant speed. Okay, so it may, the speed may vary, that doesn't matter. But ए दी जण ए दीटा frame of reference. Okay, जते बेले देखिबे ए मूविंग पार्टिकल P को
एटा मन रख दीटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जेतेबेले कांस्टेंट किंबा यूनिफॉर्म वेलोसिटी अबा कांस्टेंट वेलोसिटी रिलेटिव टू ईच अदर ओके दीटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जेतेबेले दी जनकर परस्पर रे गोटे कांस्टेंट वेलोसिटी रे मूव करूचंती ता अर्थ कोन गोटे फ्रेम ऑफ रेफरेंस आइदर रेस्ट रे अछि किंबा ई फ्रेम भी जदी मन कर मु भी मूव करूची मो सामने रे गोटे कार मध्ये मूव करूची बट आम दी जनकर वेलोसिटी होची कांस्टेंट ता माने आमे जेतेबेले गोटे मूविंग पार्टिकल को देखिबो ऑब्जर्व करिवो सेते बेले कोन हबो विल मेजर द सेम एक्सेलरेशन फॉर द मूविंग पार्टिकल माने मु जो एक्सेलरेशन आ पई माने मेजर करि परिबी सेम एक्सेलरेशन ये मध्ये ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस मध्ये सब बेले सेम मेजरमेंट करिवो हला but not necessarily this p point is moving at a constant speed ये तार स्पीड जाय भी हो but तार स्पीड जदी जाय भी थिबो गोटे एक्सेलरेशन थिबो so will measure the same acceleration तो सेमदी हम डिस्प्लेसमेंट जदी देखिबा ए केस रे this is at rest let us consider this point is at moving and गोटे instantaneous point रे माने गोटे delta t equal to 0 delta t equal to 0 गोटे पर्टिकुलर इंस्टेंट रे ए पार्टिकल टा किबा ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस रे जो लोकोटी ठिया आइची किबा बसिछि सी ए पार्टिकल मूविंग पार्टिकल रा एक्सेलरेशन कैलकुलेट करूची तो से केस रे कोन हम लिखिबा xpa माने ए जो एटा मन कर नियो p पॉइंट एंड एटा ए सॉरी एटा तो p नि आइची ठीक सो एटा होची p हां तार x एक्सिस ता मन कर xp हां एटा a पॉइंट माने xa so xpa pa रो जो डिस्टेंस ता so displacement by distance ताको केमति लिखिबा xpb माने p आउ b भितरे जति डिस्टेंस एटा मूव करूची बट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट एटा हम कोन वी कैन कंसीडर इट टू बी एट रेस्ट है xpb प्लस एतिक डिस्टेंस हम लिख परिबा सिमिलरली तार जति हम डेरिवेटिव करबा vpa will be what vpb plus vpa माने कोन वेलोसिटी will be again माने तार सम ता हे जो वेलोसिटी Similarly, accelerate तार डबल डेरिवेटिव करबा सो एक्सेलरेशन मध्ये हमें सेम पाइबा xpa is equal to xpb हमें पाइबा हला ता अर्थ कोन मु ताको प्रूव आ करिने डायरेक्ट फार्मूला टा इट लिख देछि प्रूव मध्ये हमें कर परिबा जे हमें माने pa माने कोन ए जो p आ a भितरे जो एक्सेलरेशन p आ b भितरे मध्ये सेम एक्सेलरेशन ता अर्थ कोन दी जण सेम एक्सेलरेशन मेजरमेंट करछन ओके so सेमिति ए गोटे 2 डायमेंशनल कांसेप्ट को जदि हम देखिबा एटा होची 1 डायमेंशनल एटा होची 1d 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल ले सेमिति कोन हे जिवो 2 डायमेंशनल मन करो एटा गोटे फ्रेम a x y एक्सिस एटा गोटे फ्रेम a एटा गोटे फ्रेम b हां दे आर मूविंग एट ए द फ्रेम b इज मूविंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी देन फ्रेम a let us consider so there are two axes x axis and y axis let us consider एठी होची गोटे पॉइंट p जोटा कि मूव करूची एंड हमें कैलकुलेट करूचे ए फ्रेम रो मध्ये कैलकुलेट करूचे ए फ्रेम रो मध्ये हमें कैलकुलेट करूचे सो हम दी जण को कोन मिलबो ए दीटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस रे ए पार्टिकल रो जो एक्सेलरेशन समान एक्सेलरेशन दी जण मेजरमेंट करिवे ओके सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक कांसेप्ट एटा सब प्रॉब्लम रे जते हमें replicate करिवा these basics we have to माने replicate while solving problems okay गिरिजा बंद करो म्यूट करो जानी परनो कार म्यूट अनम्यूट हे जोची so whenever ए प्रॉब्लम टा सॉल्व करो समस्त जल्दी को कोन हो what will be the value what will be the value sorry for this it are faltu circle da hala so let us consider this a uniform circle so velocity of the kono particle is -4 meter per second so let the
particle is moving at anti-clockwise direction. So tangent to the particle will give you what? The velocity. So the x is equal to -2 meter the object is at, let us consider this x is equal to minus, it has the positive x, this is, let us consider positive x, this is negative x, this is origin. So let this ethic distance is -2. So let this point is x is equal to -2. What is the velocity? 4 meter per second j cap, -4 j cap, -4 j cap. Give the object's velocity and acceleration at y equal to 2 meter. So एमती बुलिला anti-clockwise जाएगी. So let us a जगह रे पहुंचला. So let us consider this. It कौन y axis. This is y axis. It a negative y. It a positive y. So y equal to 2 meter रे पहुंचला. Body. What is the velocity? What is the velocity? Velocity रो magnitude कौन कहथिली linear velocity रो magnitude कौन रहयो समान रहयो but direction opposite हबो किबा change हबो. So a y equal to 2 meter रे जते पहुंचला, whenever the body reaches y equal to 2 meter, what will be the velocity? In which direction the particle, the velocity vector is drawn? Negative x. So what will be this? -4 I cap. Okay. So what will be the acceleration at y equal to 2 meter? If velocity is equal to -4 I cap, what will be the acceleration? 8 meter per second square. -8 meter per second. What is the direction? Towards the center. Towards the center. But what is the direction? Negative or positive? Negative. Very good. ता माने कौन होबो सेटा? J cap होबो ना y cap होबो? J cap. Very good. So एटा कौन होबो? को -8 meter per second square J cap. Okay, or you can write -8 J cap meter per second square. एमती लिख परिबो. Okay, -8 कौन पाइला? A is equal to v square by r. Very good. माने रेडियस टाइम एठी केते पाइछे ऑलरेडी हमें 2 हमें जानि छी 2 हला सब निजे बाहर करिया पे चेष्टा करो माइंड रे तुम सब इक्वेशन रे माने सब जिंस डाटा क्वेश्चन रे देई न थाए किंतु क्वेश्चन रे ता फिर भी से लैंग्वेज रे इटसेल्फ डाटा थाए निजे बाहर करिया चेष्टा करियो. साहिल गिरी बुझियला? साहिल हेलो. आज्ञा सर. कौन बुझिलो ना नहीं एटा? हां सर बुझिलो. आ डरी की कोन है बोलो की को? नहीं सर बुझि पाइली. 100% बुझियला? नहीं सर. तू आउ न बुनु. हां अनुसया को बुझिउछु ना नहीं? यस सर बुझिउछु. अच्छा हो. अविनाश? यस सर बुझि. वेरी गुड. प्रभु प्रसाद? यस सर बुझिउछु. संतोष प्रीतम बेरा? संतोषिनी ओरम? हाँ संतोषिनी हेलो. हाँ को संतोषिनी कोड आछछ? एडा सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट. सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट. आज्ञा. केन सुंदरगढ़ केन? बने. बने. हां आज्ञा. बुझी होची कि नहीं? आज्ञा होछे. आज प्रथम क्लास के? आज्ञा. नाइ डरबो बुझलो? आज्ञा. तमे नाइ बुझ पारले मुई संबलपुर ने कहबी. आज्ञा आज्ञा. किछि प्रॉब्लम होबनी हला? आज्ञा. आज एटा पूरा प्रथम स्टार्टिंग पढौ छे फर्स्ट ईयर रो. केन कॉलेज रे पढुतलो बाबू?
आज्ञा इडा सीडिया कॉलेज सेटा केन अछि बनै रे बणी हाँ बनै हां ठीक 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 किछि प्रॉब्लम हेले कहबो हला आज्ञा अच्छा एटा प्रथम क्लास आमे बहुत गुडे क्लास नहीं जाइछु हला आ सब रिपीट करिवु किंतु फर्स्ट ईयर रो मु स्टार्टिंग एटा पढौछि जति में आज्ञा किछि डरबो नहीं हला आज्ञा हो म्यूट कर दियो साहिल म्यूट करो अच्छा हो इटा हला कथा तापरे इटा देखिबा हाँ श्वेता समझ में आ रहा है कि नहीं कि उड़िया थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है नहीं समझ पा रहा है। हाँ वेरी गुड थैंक यू सो हाँ a plane flies 483 kilometer east from city A to city B. Let us consider this is the origin. East को पट direction east. इटा कौन west. इटा होची north. North sorry north and this is south. कितना गया 966 किलोमीटर माने x is equal to 966 किलोमीटर I cap काहे की x direction रे जाउची 966 किलोमीटर I cap you can write the vector जदि हमें देखिबा so from city B to city E so छाड़ा so B to C गला 966 किलोमीटर in 1.5 hour डेढ़ घंटा रे पहुंचला 966 किलोमीटर for the total trip sorry so city A to city B so this is A this is B east direction रे गला केते 45 minutes रे गला 45 minutes में गया 966 किलोमीटर सॉरी सर 483 किलोमीटर हाँ सॉरी 45 बाहरी वाला आंसर बाहरी वाला ना सर से गल्ले अच्छा 483 किलोमीटर सॉरी 483 किलोमीटर मो वाली पिला ने आंसर बाहर कर देले खुशी हेगली से 483 किलोमीटर इन 45 मिनिट्स तापरे B to C गला कोन साउथ so 966 किलोमीटर साउथ फ्रॉम B to C माने B to C एमती गला साउथ डायरेक्शन रे and 966 kilometer in what 1.5 hour so for the total trip what are the magnitude and direction of the plane's displacement total trip pai what are the magnitude and direction of the plane's displacement and magnitude and direction of the average velocity Sir, displacement have √3 into 483. जल्दी को टोटल फाइनल मत बाहर करी को एटा 10th क्लास क्वेश्चन एटा प्लस 2 क्वेश्चन न डिस्प्लेसमेंट ता सब बेले कोन रे पिले तमे एमती पाइथागोरस थ्योरम पके करिवो ना पाइथागोरस थ्योरम पके करिवो नाही what you can write like the माने एटा केमती लिखिबा जदी हमें लिखिबा एटा वेक्टर नोटेशन रे लिखिबा केमती लिखिबा को 45 मिनिट्स को किबा आवर रे जदी हमें कन्वर्ट करिबा what will be the answer 45 divided by 60 हैला 3/4 hour okay so vector notation रे हम केमती लिखिबा एटा को वेलोसिटी टा कोन होबो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ए टू ए पोजीशन को गला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम केमती लिखिबा
966 divided by 3 by 4 into 4 divided by 3 अगर करिबा हला. So this is the velocity in what positive x direction. So ए जो quantity, so एटा को तमे नियो vx I cap. What is this 966 sorry एटा 966 हबनी एटा कोन हबो 483 हो. So सिमती vy टा कोन होई जिवो vy टा कोन होई जिवो 966 divided by 1.5 j cap. किंतु एटा कोन होई जिवो since it is going to the negative y direction तो एटा को minus 966 by 1.5 j cap नियो हला. So एबे मते को velocity रो कोन हो what is the magnitude of the total displacement किबा average velocity रो magnitude कोन हो को. So x I cap minus y j cap जदि हमरो इक्वेशन अछि हम तार मैग्नीट्यूड केमति बाहर करू रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर सेमती एटा को करिवो हला. एटा तम मानक पई रहिला ई प्रॉब्लम एटा के जे एटा इजी प्रॉब्लम एटा तम मानक पई रहिला तमे लेखो एटा स्क्रीनशॉट नियो किबा लेखि दियो क्वेश्चन लेखि गिरी मते सॉल्व करी कहिवो. मो एमती प्रतिदिन किछि प्रॉब्लम दउची किछि करूनो ए गोटे केही करूनो खाली डाउट तमर बाहरची कुळाए किंतु जेति की प्रॉब्लम दिया होची जेति की करा हो किंबा बहुत उडे जगह रे मो प्रॉब्लम बहुत सॉल्व करूची तार वैल्यू एमती मु लेखि दउची तमे निजे जाई कि केबे खाता रे करूनो. अच्छा कैलकुलेटर अलाउ अछि की एग्जाम रे तमरो जो नीट जेई एग्जाम रे कैलकुलेटर अलाउ है क्या? नो सर. अच्छा कैलकुलेटर अलाउ नहीं है. अगर हम लोग ये वैल्यू कैसे निकालेंगे उसको अगर हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे होगा हैं? This question is for you people ना. This is a 10th class question. बात करी को तमे पाइथागोरस थ्योरम पका जा करछो करो मते कि जे लेनदेन नहीं. So find out this value. What is the total displacement? टोटल डिस्प्लेसमेंट रे एठी पाइथागोरस थ्योरम न पकेले मध्ये चलिबो तमे बाहर कर परिबो एठी केते गला एसु बाहर कर परिबो बाहर करी कहयो हला एक क्वेश्चन. So a ball is thrown at a wall at a speed of 25 meter per second and at an angle 40 degree. एटा ओडे बॉल अछि एटा थ्रो करागला and a wall is at a distance 22 meter. So let us consider a wall. What a kantha अछि हैं. This is a wall. This is at distance what 22 meter from the release point of the ball. Mane this is the release point of the ball. Angle 40 degree to the horizontal. So this is the projectile motion. This is the projectile motion and what is the angle of this velocity vector 40 degree. 40 degree to the horizontal. So how far above the release point does the ball hit the wall? How far above the release point माने ये बॉल कितना हाइट तक गया है. This is the release point से कितना हाइट के ऊपर ये बॉल जाके स्ट्राइक किया ये वॉल पे. So that is the question. So now you put these formulas what I have said you just now. So इस पोजीशन में मतलब इस प्रॉब्लम के लिए कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल है मुझे बताइए. कौन बताएगा कि कहियो को. So these are the 4 equations. ए चारटा इक्वेशन नहीं गेले सब सॉल्व हो जिवो. केमति करिवा टिके मुंडो खर्च करो. The ball is thrown towards the wall at 25 meter per second. माने v टा होची 25 meter per second. What is vx? What is vx?
What is Vx? What I have said, V cos theta है कि नहीं, V0 cos theta माने initial velocity is V0 cos theta. Cos theta is cos 40 degree now, so V0 cos 40 degree. So cos, let us, I am giving the value, cos 40 degree is equal to 0.76. cos 40 degree टाकू मु already लिखि देली तम स्क्रीन रे, so that is equal to 0.76. let us consider, so केते हबो, what is V0? 25 meter per second. 25 into cos 40 kete 0.76. So this is called Vx. अच्छा, ये जो बॉल टा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस केते गला, एठी जो बाड़े हैला, ए प्रोजेक्टाइल टा जो एठी ऊपर से ना बाड़े हैला, but what is the horizontal distance traveled by the ball? That is 22 meter only. So what will be the time? What will be the time Vx, or you can say, sorry, x divided by t or delta t. तमे लिखि परिबे हला, delta t माने एटा t equal to 0 and t equal to t, suppose let us consider. So simply लिखो x by t. x टा केते 22 meter divided by, sorry, Vx. X by v माने displacement by velocity will give you the time. So 22 meter divided by, what is this, 25 into 0.76 होगा Vx. केते पाइलो, केते पाइबो, 1.15 second. 1.15 second. All of you please go again and try to solve again in your copy. निजे निजे मु वैल्यू पके दोची माने तम भाबनी, देखो हमको जहा एठी मु पढौची तम भाबनी, you don't think I am Einstein. I am also solving problems like you. I am a student now, so I may not know everything in physics. Okay, मु भी सब जाननी, तमे सब जे पचार देले मु सब कहि देबी बोली माने भाब नै, किंतु जस्ट टिके तमे निजे भी चेष्टा करो प्रॉब्लम सॉल्व करिया पे. मु एठी जाबत्य प्रॉब्लम तम मान सॉल्व करूची. को मास्टर एमती बसी की गोटे 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 प्रॉब्लम सॉल्व करियो नै. यू गो टू एनी कोचिंग सेंटर, यू गो टू एनी कॉलेज, कहीं एति की प्रॉब्लम सॉल्व करेबे बसी की हला. तो प्लीज मु कहूची, मु तम मान को जेति की पढौची, that is enough I think for to get any entrance examination. किंतु बेसिक गुडा को टिके भलो भाबरे बुझो. cos theta sin theta एगुडा सब मु पढौची माने 90 डिग्री, व्हाट इज x कंपोनेंट y कंपोनेंट एमती बसी के पढे. तमे मु कहूची, मु जेतेबे प्लस 2 पढुतली तम मान बळिया, मु जेतेबे जाईतली कोचिंग सेंटर कोडे माने नामी दामी कोचिंग सेंटर ना कहूनी, से प्रथम क्लास रे गोटे सर आसिले, से x y कोन कोन काटी देले मु किछि बुझी पाइली. सो एतिकी बेसिक, एतिकी माने लोअर लेवल को जाई की पढेबा, so you will not find anywhere. So please kindly try to solve the problems again in your copy. जोटा पढौ छै एटी पुणी अत्र जाई की करो हला. सो एटा होची 1.15 seconds तमे पाइबो, that is the time. So एबे मते को इक्वेशन पकेले हमको मिलिबो जे हरे वर्टिकल डिस्टेंस ता केते गला. एटी जो मु ड्रा करथिली, ए जो वर्टिकल डिस्टेंस टी केते गला, एटा हमें केमती पाइबा. ए वर्टिकल डिस्टेंस ता केते गला माने कोन पिले, y टा हमको कैलकुलेट करिया पड़ियो. y एक्सिस टा हमको कैलकुलेट करिया पड़ियो हला. ए डिस्टेंस टा केते किबा ए डिस्टेंस टा केते हमको मागिची. हाउ फार अबव द रिलीज पॉइंट, ए रिलीज पॉइंट रु केते ऊपर को बॉल टा हिट हला हमको मागिची. सो एठी जो चारटा इक्वेशन मु प्रोजेक्टाइल रो कहितली, को इक्वेशन टा प्रयोज्य, व्हिच इक्वेशन इज एक्चुअली एप्लीकेबल. हां प्लीज. हां, v0 sin theta into t minus half gt square. हां, डेल्टा y is equal to ता माने कोन, y फाइनल माइनस y इनिशियल इज 0. सो पूरा एटा को लेख, निजे लेखियो पड़ियो. शॉर्टकट डोंट माने अप्लाई शॉर्टकट्स,
टिके परिश्रम करा आग तापरे तुम जेतले माने एक्वेंटेड हे जीवो problem solving re, so you need not write all these things ape mentally you can solve those things. So y minus y0 is equal to v0 sin theta t minus half gt square minus half gt square. So what is y minus y0? हमको कैलकुलेट करिया को पड़िबो ये y minus y0 हमको कैलकुलेट करिया पे मांगी छी. What is v0? 25. What is sin theta? Sin 40 degree. Sin 40 degree. What is time? Time हमें इटे कैलकुलेट करले 1.15 second 1.15 second minus half into g रो वैल्यू कोन 9.8. एटा ऑलरेडी हमें माइनस नहीं जाई छे सेति भाई 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर into t टा कोन हे जीवो t टा अगेन 1.15 रो होल स्क्वायर हे जीवो हला. एटा को sin 40 रो वैल्यू मध्ये मु लिखि दउ छी इठी हला. तुम गोटे टेबल देथिबो you will get a table sin table cos table in your examination. So I don't know if you all are acquainted mane with this or not, mane how to calculate the value of sin or cos by using that table. Okay, seta madhya mate ketale gote kaya padibo. So when physical classes will resume we can discuss. Okay, sin 40 degree will be equal to 0.64. So a equation रे sin 40 रो वैल्यू पकाओ एटा को स्क्वायर करो g रो वैल्यू हमें जानि छे g रो वैल्यू होची 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमें सब बेले जानि छे एटा. तो एटा को तमे कैलकुलेट करकी तमे पाइबो केते 12 मीटर पाइ 12 मीटर. So that means 12 मीटर हाइट रे ए बॉल टा जाके बाडे हेला वॉल रे. Okay, so now second point, what is the horizontal and vertical component of its velocity b point and c point as it hits the wall? So we need to calculate what vx and vy, horizontal and vertical component of velocity. So vx टा कोन कहिथि v0 cos 45 degree sorry 40 degree. So just calculate it. A formula पके calculate करो. Similarly vy is equal to v0 sin 40 degree is equal to calculate. All of you try to calculate using these values. Similarly तापर एटी कोन मागी छी d point रे when it hits has it passed the highest point on its trajectory? माने गोटे प्रोजेक्टाइल जेतल जाउची एठी रीच करूची. So what is the highest point? This is the highest point. किंतु आमे जदि गोटे वॉल ता पूर्वरु थोई देबा ताले से प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट रीच करिवो की? No, but we don't know whether this projectile has reached its highest point or not. हला मु गोटे एमती ड्रॉ कर देली बट मु केमती जानिबी at highest point what is the velocity? What is the velocity at highest point? Vy is equal to 0. The velocity at highest point is equal to 0. Okay, so जदि हमको vy गोटे value positive value मिलिला then we can say no, it has not passed its highest point on its trajectory. Okay, so if vy is greater than 0, so definitely it has not reached its highest point. Okay, so एटा को कैलकुलेट करले तमे जानिबो whether the body or whether the ball or projectile has reached its highest point or not. Okay, shall I proceed? Hello. हाँ एटा और देखो एमती सब चित्र किए करबेन रे. So this is the advantage of online class that I am using such type of diagrams to make you understand. So a plane is driving with a constant साठी speed. पूर्व क्वेश्चन साठी लेखा
ସେ ହେଇଗଲା ହେଲା ଏ क्वेश्चन ର स्क्रीनशॉट नियो ମୁଁ ଟିକେ ତମ ମାନଙ୍କର अटेंडेंस नहीं जाए ओके ए क्वेश्चन टा तम मान को रहिला ए क्वेश्चन टा जो स्क्रीन रे देखा होची इट इज अ टास्क फॉर यू पीपल हा मते सॉल्व करी कि नेक्स्ट क्लास रे कहयो आज ऑलरेडी टाइम हे गेलानी मु देखियो नेक्स्ट क्लास रे हमें देखा हबा ए प्रॉब्लम टा मु सॉल्व करबी जदी की करि पाथिबो so this problem is a task for you people ha please write or take a screenshot ha? Thank you. Thank you, huh? Thank you. Okay, sir.